Group 4 introduction and strategy. If we talk about group 4, there are four subjects. First one is cost audit, second one is FR, that is financial reporting, third one is IDT, that is indirect taxation, and in fourth subject there are three options: 20A, 20B, 23, 20C. But most of the students select 20A, that is SM and BVM, strategic management and business valuation management. So cost audit is divided in five sections. Most important section is cost audit. Cost audit section, right? In that, if we talk about your examination pattern, most of the question is asked as practical questions, right? What type of practical questions? First one is, that is reconciliation. It is based on your inter only. Then value addition statement, then ratio analysis, and most important, practicals based on CAS, that is cost accounting standards. From this category, one question can be asked in your examination. So cost audit is pertaining mostly 70% of your syllabus, but in that 70%, 70%, I'm talking about, most of the students left leave that management audit part or internal control part. But if we do cost audit in detailed manner, so it can be, it 70% of your marks can be secured from this, right? Cost audit section, cost accounting standards are most important. That is 24 cost accounting standards are there. In that we have to do its practical and theory as well. Then if I talk about section 2, then it is of management audit. Management audit, there are no case studies or no practical problems. Every question is one kind of repetitive question. What you have to do, if I were the student, I have to do definition of management audit, advantages, disadvantages, scope of management audit, right? In that, second part is qualification of management auditor, most important. So if we do second part, management audit, in that definition, advantages, disadvantages, scope, characteristics, or qualification of management, if you do this kind of questions, this many questions, then it will be enough. It kind of repetitive question in management audit. So we talk about section 3, internal control system. Internal control system is, in that, internal auditor question, corporate internal structure kind of question can be asked, but it is less important, right? And
Section 4 is forensic audit and anti money laundering, right? It contains at least 10% of your syllabus, and one question can be asked. This is a new addition in syllabus 2022, but it is very important from examination point of view. So, if we talk about all this section, most important part in cost audit, if I have to cover 60 plus, then you have to do five things. Moral of the story is you have to do five things to cover 60 plus in cost audit. First one is CAS, then practicals in cost accounting, that is based on cost audit. In this section, you will learn cost records applicability, cost audit applicability, doing how to do cost audit from appointment of cost auditor till reporting of cost audit. Third one is management audit. These questions fix, you have to do this kind of questions. Whatever question can be asked, you can relate this question with question which is asked in examination. Then fourth one is forensic audit, and fifth one is internal control. So to start with cost audit, first if you can go through with the cost audit section. So 70%, why I have given weightage of 70%? 70% relief get can be get by students, because अगर आपको प्रैक्टिकल से आप क्रैक कर सकते हो तो आपका 70 मतलब पास होना तो आपका फिक्स हो गया, राइट? तो 70% स्कोर you can easily get in cost audit section. So this is about cost audit. If we talk about FR में most of the student face difficulty in clearing FR subject, right? कैसे start करना है, how to start with, सबको confusion होता है. So basically FR को मैं divide करूँ तो वो एक है इंड एएस जो आपके 25% स्कोर करता है. सो अगर इंड एएस में आपका 25% स्कोर हो जाता है, वॉट एवर इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और इन केस ऑफ थियोरी, देन आपका 40 में से 20 मार्क्स, 25 में से मैं समझती हूँ 20 मार्क्स को कैन बी सिक्योर इन इंड एएस, right? Second one is valuation part. In that valuation part, goodwill valuation and share valuation. Most important, 10 marks of practical question can be asked in goodwill valuation, right? Goodwill valuation or share valuation. Then third one important topic से मैं बोल रही हूँ. Then आपका आता है combination, which is based on Ind AS 103. 10 marks और 15 marks का प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक फिक्स है. बहुत लंबा क्वेश्चन है, उसमें से सबको आए ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ अकाउंटिंग एंट्रीज एंड कैलकुलेशन पार्ट के मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, तो देन इट इज डिपेंडेंट ऑन एग्जामिनर.
ऐसा ज़रूरी नहीं आपको पूरा क्वेश्चन रॉन्ग भी मिल जाए, उसके मार्क्स भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। बट अगर ये क्वेश्चन कब अटेंड करने का, लास्ट, बराबर। बहुत लंबा क्वेश्चन है, सो इट विल टेक एटलीस्ट योर 45 minutes ऑफ योर एग्जामिनेशन पेपर। फोर्थ वन इज कंसोलिडेशन। अगेन वो भी लंबा क्वेश्चन, 45 minutes। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो ऑप्शन में निकालते हैं, मतलब मैंने भी निकाला था। फिफ्थ वन इज माय फेवरेट पार्ट, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है कि प्रैक्टिकल में ना थियरी छोड़ देते हैं, बट अगर अपने थियरी पे कॉन्सेंट्रेट करें तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन फिक्स है जो आपको मोर और लेस 5 to 10 मार्क्स का पूछता है। सो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट ट्रिकी आ जाए और आप एग्जाम्पल सॉल्व ना कर सको, देन थियरी कैन बी सर्वाइवल फॉर यू। कोई भी पेपर एफआर के 40 to 60 मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो बहुत ही ब्रिलियंट नहीं है, रैंकर्स नहीं है, उन लोगों के लिए है। तो पासिंग स्ट्रेटजी के लिए इंडेस, वैल्यूएशन, कॉम्बिनेशन एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग करो, और उसके साथ छोटे छोटे टॉपिक्स विच इज वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन स्टेटमेंट, देन XBRL थियरी पार्ट। इतना करके जाओ तो 40 to 60 तो आपके स्कोर हो ही जाएंगे। और उसमें भी एक कंडीशन है, MCQ। अगर आपके MCQ परफेक्ट होंगे एंड आप ये 4-5 चैप्टर करके जाओ, देन स्कोरिंग 40 to 60 मार्क्स इन FR इज डैम इजी। बट मेक श्योर कि आप जो ये सब्जेक्ट्स करते हो, इतने चैप्टर्स करते हो, अगर आप कंसोलिडेशन छोड़ देते हो, 2-3 इंडेस छोड़ते हो, बट वॉट एवर यू डू, you should do perfectly. You should do from module, you should do from reference book, you should refer past papers and all that. Okay, so this is very important to score 40 to 60 in FR for ordinary student. ऐसा नहीं है कि 60 प्लस आना बहुत ही डिफिकल्ट है, नहीं नहीं आएंगे, बट स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स को सिर्फ पास होना मांगते हैं, 40 to 60 लाना में, 40 के 60 मार्क्स के बीच में, तो इतने अब स्ट्रेटेजी यूज करोगे, डेफिनेटली यू विल सर्वाइव इन द एग्जाम, राइट। देन आई एम कमिंग टू IDT part. I'll not talk about this much because IDT is everyone know, you have gone through in India, Inter. IDT is divided in two parts. 70% is of GST and 30% is custom. For that we will upload another video in our YouTube कि IDT में आपका 60 प्लस स्कोर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, राइट। नाउ I'll talk about this SM and BVM. I'll rub this. So अगर मैं पहले बात करती हूँ BVM की, देन BVM मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक is merger and acquisition. Normally your weightage is as per module is 15%, but if you refer past paper, then according to me it is 20% to 25%। MCQ गिन लो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स गिन लो, 20 to 25% मर्जर एंड एक्विजिशन से बात करते हैं। सो अगर आपको 60 प्लस स्कोर करना है, देन इट इज डैम इजी। इन ग्रुप 4 you can score 60 plus in cost audit and BVM easily. So to score 60 plus,
मर्जर एंड एक्विजिशन आपको करना है. Then again there is a repetition of FR, valuation of goodwill and share. So if you start preparing for valuation of goodwill and share, it will cover your two topics from two different subjects, that is BVM and FR, right? Then valuation of human resource, then value addition statement, and some theory questions based on valuation model, right? So BVM में आपको मर्जर एंड एक्विजिशन, वैल्यूएशन पार्ट एंड थोड़ा थियरी के क्वेश्चन करोगे तो BVM का 50% में से 35 to 40 you can easily score, right? If I talk about SM, right, SM में आपके 4 स्टडी नोट्स हैं, 4 स्टडी नोट में SM इज डिवाइडेड, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी नोट है स्टडी नोट नंबर 2. उसमें से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो है एक जेड स्कोर मॉडल, मार्जिनल कॉस्ट एंड रेवेन्यू. और ऐसे में कोई ऐसा केस स्टडी या घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछता है. ऑलवेज दे आस्क स्ट्रेट क्वेश्चन, right? Straight question they are asking from SM. So study not 1 2 3 4 में से आपको straight question easily कर सकोगे, right? So this is about SM BVM. So अगर आप ग्रुप 4 का स्ट्रेटेजी अपने देखेंगे तो कॉस्ट ऑडिट से अपने स्टार्ट करेंगे और BVM से स्टार्ट करें. इन दैट मर्जर एंड एक्विजिशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर. Then from cost audit section, appointment of cost auditor, cost audit paras are most important. So this is about group 4. Thank you.